हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं मैक्स वेबर का, कि उनकी नज़र में कौन सी अथॉरिटी लीगल कंसिडर की जाती है और कौन सी रैशनल बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें वो अपनी थ्योरी में प्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने किस्म की अथॉरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, द प्योरेस्ट फॉर्म, द आइडियल टाइप ऑफ वेबर्स लीगल रैशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी इज ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने जितनी भी क्लासिफिकेशन प्रेजेंट की अथॉरिटी के हवाले से, उसमें सबसे जो बेहतरीन है, ये जो कि आप जिसे आइडियल मानेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हिरार्किकल बेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक डिफरेंट एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, फिर एक ही रूल्स फ्रेमवर्क के तहत सबको रेगुलेट किया जाता है। Legal rational authority indicates that authority is invested in a set of rules and rule-bound institutions, and that the creating and changing the rules are outside the control of those who administer them. It does not mean, however, that the authority is democratic. अच्छा, लीगल रैशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि जब आपको अथॉरिटी दी जाती है ना, तो 7 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स भी बता दिए जाते हैं और उसी के मुताबिक पूरे अदारे को चलाया जाता है, और उनको ये अथॉरिटी नहीं दी जाती कि भाई आप रूल्स में चेंजेस करते रहो। ठीक है, मतलब उन्हीं रूल्स के मुताबिक आपने सब कुछ रेगुलेट करना है। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि जो अथॉरिटी है वो डेमोक्रेटिक है। मोनॉक्स एंड इवन अथॉरिटेरियन लीडर्स who recognize a set of laws external to their powers govern using legal rational authority. इसी तरह मोनॉक सिस्टम जो बादशाहत का कॉन्सेप्ट है, ये जहाँ पर अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं लीडर्स, वहाँ पे भी एक्सटर्नली इन सेट ऑफ लॉज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन सोशियोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल लीगल डोमिनेशन कम्स फ्रॉम मैक्स वेबर्स ट्रिपर्टाइट। ट्राइपर्टाइट का मतलब होता है 3, ट्राइपर्टाइट क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो सोशियोलॉजी में ये जो रैशनल लीगल डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये मैक्स वेबर की थ्योरी से ओरिजिनेट हुआ है, जो उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन बताई थी अथॉरिटी की। One of several classifications of government used by sociologists, the other 2 forms being traditional authority and charismatic authority. एक तो हो गई ना कि जो अकली तौर पे एक कानूनी हैसियत जिस अथॉरिटी को दे दी गई है, एक जो पहले रवायती अंदाज था अथॉरिटी का, और एक जैसे कहते हैं ना कि किसी के पास ताकतें हैं, करिश्मा है, कोई जादू करके दिखाता है, तो वो वाली जो अथॉरिटी होती है वो करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है। इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया? जी मैम। Max Weber's theory, type of authority. Max Weber broke down legitimate authority into 3 different types of societies: traditional authority, rational legal authority and charismatic authority. उन्होंने अपनी लीगल अथॉरिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ये जिनके मैंने नाम अभी आपको बताए हैं। Each of these authorities has their own unique complex societies that have evolved from simple definition. अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल ग्राउंड्स इज द टाइप ऑफ पावर that has been around longer. It is the type of power that is traditionally rooted in beliefs and practices of society. मतलब पहले वक्तों में क्या होता था कि जो आपके ईमान होते थे और जो रस्म रिवाज थी, और रस्म रिवाज की बुनियाद पर जो पावर दे दी जाती थी, हम उसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी का नाम देते थे। This authority is liked by many individuals because of 2 main reasons: the inheritance of past generations and religiousness that the societies have. मतलब पहले से जो हमारी एक नस्ल की या बाउजदाद की जो एक रवायत चलती आ रही थी, या जो जिस मजहब को हम फॉलो कर रहे थे, ये उसकी वजह। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन और कस्टम दैट इज फॉलोड बाय द ट्रेडिशनल लीडर्स। इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्टेटस इज अ की कॉन्सेप्ट। अब जब रवायात की बात आती है ना, तो उसमें उन रवायात में ये भी देखा जाता है कि आप किस रैंक के बंदे हैं। There are no requirements to serving as a traditional leader, but there are no salaries. The consequences to traditional authority are discouragement of education and rational calculation. तो रवायती अख्तियार की वजह से उसमें इस बात की कोई फोकियत नहीं दी जाती थी, कोई अहमियत नहीं दी जाती थी कि कितनी आपकी एजुकेशन है, ये रैशनली क्या उनके अपने अंदाजे हैं। मतलब वो इसमें ये किया जाता था कि जैसे बाउजदाद में एक किसी के पास बड़ा ओहदा है,
तो उसी को लीडर बना दिया जाता था। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ अ डोमिनेंट प्रोफाइल, one who embodies tradition and rule. This type of leadership exemplifies the power to construct order. Clear हो गया आपको? Yes, ma'am. इस पे कोई सवाल? No, ma'am. अच्छा जी। Number 2, rational legal authority, rational grounds, acquired from law and is constructed from the reliance of society's rules and laws. This type of authority has the confidence to leave the right of leaders to undertake the decisions and set the policy. Rational legal authority is the basis of modern democracies. Examples of this type of authority: officials elected by voters, rules that are in the constitution or policies that are written in a formal document. अब ये जो आपके माशरे के असूल ज़वाबत हैं, ये जो कवानीन हैं, उस पर इसका दारोमदार है रैशनल लीगल अथॉरिटी का। तो जैसे कि हर मुल्क में क्या होता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इलेक्शन के जरिए सेलेक्ट किए जाते हैं, रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में देखते हैं, पॉलिसीज फ्रेमिंग होती है, इसे रिटन डॉक्यूमेंट में ढाल लिया जाता है। ये सारी रैशनल लीगल अथॉरिटी की बुनियाद है। रैशनल लीगल अथॉरिटी इज बिल्ड ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इन अ रैशनल लीगल अथॉरिटी, वन ascends in their career path through promotion and then eventually retire. अब जो हमारा रैशनल लीगल अथॉरिटी का निज़ाम है वो ब्यूरोक्रेसी पर इसकी बुनियाद है। हम इसमें कैसे तरक्की करते हैं कि हमारी प्रमोशन होता है तो हम आगे मंजिलें तय करते जाते हैं और आखिर में आप अपनी मुलाजमत से रिटायर हो जाते हैं। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी या ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, mass communication and our income economy. Other outcomes of rational legal authority are tendencies towards equal opportunity and a promotion of education. यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई सवाल आपका? No, ma'am. No, ma'am. Legal authority requires a logical and systematic approach to leadership. Weber's rational leadership prevails in decision making. Finally, legal rational authority drives its power from the system of bureaucracy and legality. Next, charismatic authority, charismatic grounds, comes from individuals and their personal qualities that they have to offer. Certain individuals are influential to others with their unique qualities which help them gain followers. The charismatic individuals exercise power and authority over a whole society or even a specific group of within bigger society. The exercise of their power of these individuals are either for good or bad. मतलब जैसे कहते हैं ना, इसके पास इसकी अपनी कुछ ऐसी काबिलियतें हैं जिसकी वजह से आप कहते हो कि इसके पास जादुई कोई करिश्मा है, इसके पास वो अच्छे और बुरे दोनों के लिए हो सकता है। Examples of these charismatic leaders can range from Joan of Arc to Adolf Hitler or Martin Luther King Jr. to Jesus Christ. Prismatic authority has no clear structure. It is based on one's individual influence. One is chosen to be staff by their charismatic characteristics. Someone under a charismatic authority lives under gifts, not salary. As long as someone has influence, they will be a legitimate power. In charismatic authority, confidence is the driving force of for leadership. With charismatic authority, leadership has the ability to connect distinct groups and lead them to the finish line. Emergence of the modern state. अब हम जदीद रियासत में इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेबर रोड दैट द मॉडर्न स्टेट बेस्ड ऑन रैशनल लीगल अथॉरिटी emerged, जो कि जिसका आगाज हुआ है, emerged from the patrimonial and feudal struggle for power. मतलब जो जागीरदाराना निज़ाम था ना, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, वहीं से एक पावर के लिए जो जस्तजू थी, कोशिश की जा रही थी, वहीं से रैशनल लीगल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है, यूनिकली in the Occidental civilization. The prerequisites for the modern Western state are: number 1, monopolization by central authority of the means of administration and control based on a centralized and stable system of taxation and use of physical force. जैसे कि अब जदीद तर्ज़ हुकूमत में क्या होती है कि एक सेंटर अथॉरिटी होती है जो कि सारा निज़ाम संभालती है, वही टैक्स सिस्टम को स्टेबलाइज करती है और अपनी फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करती है। नंबर 2, मोनोपोलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, फिर कानून साजी का काम भी वही करती है। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ द मनी इकोनॉमी वेयर ऑफिशियल्स आर कॉम्पनसेटेड इन मनी इंस्टेड ऑफ काइंड।
quantitative and qualitative expansion of administrative tasks, centralization and increased efficiency of administration. Rational legal leaders. The majority of modern bureaucratic officials and political leaders represent this type of authority. Officials are personally free, serve a higher authority, are appointed on the basis of conduct and their technical qualification, are responsible for the impartial execution of assigned tasks. Their work is a full-time occupation. Their work is methodical and rational. Their work is rewarded by salary and prospects of career advancement. यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल आपका? No, ma'am. Clear. Politicians. Politicians are solely responsible for independent action, must recognize that public actions that conflict with their basic policy must be rejected, should have charismatic appeal to win elections under conditions of universal suffrage. Universal suffrage का मतलब ये होता है कि बेशक आप किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हो, एक खास उम्र के बाद आप वोट देने का इख्तियार रखते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं. They are personally free and subject to authority only with respect to their impersonal official obligation. They are organized in a clearly defined hierarchy of offices. Each office has a defined sphere of competence in the legal sense. The office is filled by a free contractual relationship or free selection. Candidates are selected on the basis of technical qualification. They are remunerated. Remunerated का मतलब है कि उनके लिए सर्विसेज के लिए उनको पे किया जाता है by fixed salaries in money, for the most part with the right to pensions. He is subject to strict and systematic discipline and control in the conduct of the office. हाँ जी, कोई सवाल आपका? ये आपकी मैक्स वेबर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन करना है या इतना ही करना है? मैम ये आज इतना ही रहने दें, मैं ताकि याद भी कर लूँ. अच्छा, मैं कल